Hi everyone, welcome to Hamid Smart Learning Hub. So budget 2022 प्रेजेंट हो चुका है 1 फरवरी 22। स्लैब रेट में कुछ चेंज नहीं हुआ है इनकम टैक्स का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जो है अपडेटेड रिटर्न। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 139(1) में एंड जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 139(4) एंड रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5), इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। So that's why new section has been introduced 139(8)(a). A new subsection 8(a) in section 139 is proposed to be introduced to provide for furnishing of updated return under the new provisions. Okay, इसमें क्या बोल रहा है? Now in section 139 it is proposed to insert subsection 8(a) in section 139 of the Act to provide that any person, whether or not he has furnished a return under subsection under 139(1), 139(4), 139(5) may furnish an updated return of his income or income of any person in respect of which he is assessable under the Act for the previous year relevant to such assessment year within 24 months from the end of the assessment year. Okay, so updated return में 24 months आपको ज़्यादा टाइम दे दिया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, राइट। सपोज सेक्शन ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स फिनेंशियल ईयर होगा 2020-23 एंड असेसमेंट ईयर होगा 2023-24, राइट। सो 2023-24 से 24 मंथ्स आपको टाइम दे दिया जाएगा, दैट मीन्स 2025-26। करंट असेसमेंट ईयर होगा 2023-24, दैट मीन्स 24-25 एंड 25-26, दैट मीन्स 31 मार्च 2026 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे। ठीक है, such return shall be furnished in the prescribed form and manner and shall contain prescribed particulars. The proposed subsection 8(a) of section 139 shall not apply. किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? If the updated return is a return of a loss, अगर ये लॉस का रिटर्न है और has the effect of decreasing the total tax liability, अगर टोटल टैक्स अपडेटेड रिटर्न करने के बाद आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाता है or results in refund, increases the refund due on the basis of return furnished under subsection 1, 4 and 5. That means अगर updated return करने के लिए अगर आपका लॉस हो जाता है, अगर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, अगर रिफंड आपका आता है और रिफंड इंक्रीज हो जाता है, then you are not able to file your updated return. Okay, so इन 4 केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं कर पाओगे अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8(a). A person shall not be eligible to furnish an updated return under the proposed subsection 8(a) of section 139. फर्स्ट यहाँ पर 4 कंडीशन है जिस केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। अब क्या बोल रहा है? पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न। कौन सा पर्सन? ना जिसका ऊपर सर्च हैज बीन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर एसेट्स आर रिक्विजिशनड अंडर सेक्शन 132(a) in case of such person, or a survey has been conducted under section 133(a). A notice has been issued to the effect that any money, bullion, jewelry or valuable article or thing seized or requisition under section 132 or section 132(a). A notice has been issued to the effect that any books of accounts or documents seized or requisitioned under section 132 or section 132(a) in the case of any other provision. Okay, this provision is for the assessment year relevant to the previous year in which such search is initiated or survey is conducted or requisition is made up to 2 assessment years preceding such assessment year. अगर कोई पर्सन के ऊपर सर्च से सीजर चल रहा है, नोटिस has been issued for money, bullion, jewelry, valuable article or things सीज कर दिया गया, okay,
notice has been issued to the effect of any books of accounts, documents, उसके ऊपर सीज कर दिया गया, in that case that person is also not eligible to file his updated return. No updated return shall be furnished by any person for the relevant assessment year where an updated return has been furnished by him under the proposed subsection 8A of 139 of the Act of the relevant assessment year, or any proceeding for assessment or reassessment or recomputation or revision of income under the Act is pending or has been completed for the relevant assessment year in his case, or the assessing officer has information in respect of such person for the relevant assessment year in his possession under the Prevention of Money Laundering Act, Black Money Imposition of Tax Act 2015, or Prohibition of Benami Property, Smuggled or Foreign Exchange Manipulators. In cases में updated return of that person also is not eligible to file updated return. Any prosecution proceeding under chapter have been initiated for the relevant assessment year in respect of such person prior to the date of his filing of return under the proposed subsection 8A of section 139 of the Act, or he is a person or belongs to the class of persons as may be notified by the board in this regard. इनकम टैक्स अगर कोई पर्सन को मेंशन कर रहे हैं जो ये अपडेटेड रिटर्न नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर अपडेटेड रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होगा. It has also been proposed to amend subsection 9 of section 139 to provide that a return filed under the proposed subsection 8 of the Act, 8A of the said section 139 shall be defective हो जाएगा unless such return is accompanied by the proof of payment of tax as required under the proposed section 140B. That means सेक्शन 139 8A का अंदर अपडेटेड रिटर्न किया वो डिफेक्टिव हो सकता है अगर आपका कोई प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है एज रिकॉर्ड अंडर द प्रोपोज सेक्शन 140B. मतलब और एक सेक्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ऐड हो गया यहाँ पर जो सेक्शन 140B, जो आपका अगर सपोज आपने नील रिटर्न फाइल किया बट आपका कोई प्रूफ ऑफ टैक्स नहीं है अंडर सेक्शन 140B, देन आपका अपडेटेड रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है. ठीक है, तो न्यू सेक्शन 140B क्या बोल रहा है? हैज बीन प्रपोज्ड टू प्रोवाइड फॉर द टैक्स रिकॉर्ड टू बी पेड फॉर ऑप्टिंग टू फाइल ए रिटर्न अंडर द प्रपोज्ड प्रोविजन, दैट इज सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 139. सो ये जो अपडेटेड रिटर्न है, अपडेटेड रिटर्न आपको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, ये है सेक्शन 140B. इसका दो सिचुएशन है. एक सिचुएशन वेयर नो रिटर्न फर्निश्ड अर्लियर, जहाँ पर आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, अब अपडेटेड रिटर्न कर रहे हो, देन क्या होगा? वेयर नो रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 और 139 हैज बीन फर्निश्ड बाय द SEC, मतलब अपने ओरिजिनल रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया, he shall, before furnishing the return under subsection 8 of section 139, be liable to pay the tax due together with the interest and fee payable. मतलब आपने ओरिजिनल रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अब आपका जो टैक्स जो लाइबिलिटी है टुगेदर विथ इंटरेस्ट एंड फी, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा. ओके, फॉर एनी डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न और एनी डिफॉल्ट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स along with the payment of additional tax, the tax payable shall be computed after taking into account the following. Tax जो payable होगा आपको after taking into account the following. क्या ना, जो आपने already tax pay किया as advance tax, आपका अगर कोई TDS और TCS है, any relief of tax claimed under section 89, any relief for tax or deduction of tax claimed under section 90 or section 91, any relief of tax claimed under section 90A, any tax credit claimed to be set off in accordance with the provisions of section 115JAA or section 115JD. Such updated returns shall also be accompanied by proof of payment of such tax, additional tax, interest and fee. So आपका जो ड्यू है, टैक्स आपने जो पे नहीं किया, ओके,
ये डिडक्ट करने का बाद जो होगा उसका ऊपर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(8)(a। ये है एक सिचुएशन जहां पर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। सो ये हो गया व्हेन नो रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर। सेकेंड जो केस है वो क्या है, इन केस ऑफ एनी एससीसी व्हेयर रिटर्न ऑफ income under subsection 1, subsection 4, subsection 5 or 139 has been furnished by the SEC. Okay, suppose जिसने original return और belated return और revised return फाइल किया but वो अभी updated return फाइल करना चाहता है due to he shall before furnishing the return under subsection 80 of section 139 be liable to pay the tax due together with the interest and fee payable under any provision of this act or any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax। मतलब जिसने ऑलरेडी पे किया टैक्स अब वो रिवाइज रेट अब वो 139(8)(a अपडेटेड रिटर्न करना चाहता है, उसका जो टैक्स अगर ड्यू है टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे करने का बाद जो अमाउंट रहेगा उसका ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो टैक्स पेबल होगा ये डिटरमाइन कब होगा, कंप्यूट होगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, जो ऊपर में था सेम है। अब क्या बोल रहे हैं, द एडिशनल टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a shall equal to 25% of aggregate of tax and interest payable as determined in subparagraphs 1 और 2 above। 1 and 2 above में जो डिटरमाइन किया गया जो आपका टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल होगा उसका ऊपर आपका एडिशनल 25% टैक्स देना पड़ेगा फॉर अपडेटेड रिटर्न इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल under subsection 4 or subsection 5 of section 139 and before completion of period of 12 months from the end of the relevant assessment year। so हम लोगों का जो relevant assessment year है वो क्या है 2023-24, उसका 12 months का अंदर से 12 months कब खत्म होता है, मार्च 25। अगर मैंने सपोज फरवरी 25 में एडिशन अपडेटेड रिटर्न करना चाहता हूँ देन मुझे मेरा जो टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल है उसका ऊपर एडिशनल 25% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मैं 12 मंथ्स का पहले अपडेटेड रिटर्न करता हूँ। However, if such return is furnished after the expiry of 12 months from the end of the relevant assessment year, but before the completion of the period of 24 months from the end of the relevant assessment year, the additional tax payable shall be 50%. Okay, that means मेरा जो relevant assessment year है 23-24, इसका अगर मैंने 12 मंथ्स का बाद बट 24 मंथ्स का पहले अगर रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल करूंगा देन मुझे जो इन टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल है उसका ऊपर 50% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, अगर मैंने जो रेलेवेंट जो असेसमेंट ईयर है 23-24 उसका 12 मंथ्स का अंदर अगर मैं अपडेटेड रिटर्न करना चाहता हूँ अंडर सेक्शन 139(8)(a देन मुझे जो टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल है उसका ऊपर एक्स्ट्रा 25% मुझे पे करना पड़ेगा टैक्स। एंड इफ अगर मैं 12 मंथ्स का बाद बट 24 मंथ्स का पहले अपडेटेड रिटर्न करना चाहता हूँ देन मुझे 50% टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, These amendments will take effect from 1st April 22। So ये effect होगा from 1st April 22 जब फिनेंस एक्ट इसका बन जाएगा। Then from 1st April 22 से ये दो सेक्शन 139(8)(a एंड सेक्शन 140(b एप्लीकेबल होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी चेंजेस आया है इनकम टैक्स के ऊपर मैं डिस्कस करता रहूंगा। अगर आपको इनकम टैक्स सीखना चाहते हो, इनकम टैक्स से मास्टरी करना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन माय इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स जिसमें आपको 85+ हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम सपोर्ट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड कोर्स ज्वाइन करने का बाद आपका मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, सो इफ यू इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू लर्न इनकम टैक्स देन यू कैन एनरोल फ्रॉम हियर।
यू हैव टू क्लिक द एनरोल नाउ बटन एंड पे करने का बाद आपको कोर्स आपको मेल में आ जाएगा। वहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड देकर ओपन करना है एंड लर्न करना है। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो इन TDS मास्टरी कोर्स विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आपको TDS TCS लर्न करना है, प्रैक्टिकली सीखना है, यू कैन ज्वाइन आवर TDS मास्टरी कोर्स। इसमें आपको 75+ इंडी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम सपोर्ट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। एंड कोर्स ज्वाइन करने का बाद मेरा टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें आपको कोर्स में या प्रैक्टिकल फील्ड में जो भी प्रॉब्लम होगा आपको जस्ट शेयर करना है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो PF एंड ESI मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको 6 मंथ्स सपोर्ट मिलेगा। इफ यू वांट टू बी अ टैक्स कंसल्टेंट, you can join our TDS mastery course, income tax mastery course, ROC mastery course and PF ESI mastery course। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Don't forget to click the bell icon. Thank you so much.